Audiology and acoustics. Okay, I guess it is clearly visible and everything. So, this section aims to introduce certain terms which are frequently used in audiology and acoustics. Sound. It is a form of energy produced by vibrating objects. A sound wave consists of compression and rarefaction of molecules of the medium, air, liquid, solid, in which it travels. Velocity of sound is different in different media. In the air, at 20 degrees Celsius at sea level, sound travels 344 meters, यानी कि 1120 feet per second, and is faster in liquid media and still faster in solid media. Oh yeah, hi mama. So frequency, it is the number of cycles per second. The unit of frequency is hertz, named after German scientist Heinrich Rudolf Hertz. A sound of 1000 hertz means 1000 cycles per second. Okay. प्योर टोन क्या होता है? सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड प्योर टोन. एग्जाम्पल, अ साउंड ऑफ 250, 500 या 1000 हर्ट्ज. मतलब एक कोई एक फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर होता है तो उसको प्योर टोन कहते हैं, जो कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हम लोग यूज़ करते हैं. In pure tone audiometry, we measure the threshold of hearing in decibels for various pure tones from 125 to 8000 hertz. Sound complex क्या होता है? Complex sound. Sound with more than one frequency is called a complex sound. Human voice is a complex sound. So what you are hearing now is a complex sound. It's not a pure tone. Pitch क्या होता है? It is a subjective sensation produced by frequency of sound. Higher the frequency, greater is the pitch. Pitch और frequency को आप equate कर सकते हो. So high frequency मतलब लड़कियों का आवाज़ जो होता है वो high frequency का होता है. या हाई पिच बोल सकते हो आप. ओवरटोन क्या होता है? सो अ कॉम्प्लेक्स साउंड हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ द lowest frequency at which source vibrates. All frequencies above that tone are called as overtone. Overtone क्या होता है? जैसे कॉम्प्लेक्स साउंड है, हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एट विच अ साउंड वाइब्रेट्स. एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है एट विच अ सोर्स वाइब्रेट्स, यानी जो सोर्स, जैसे जो हम बोल रहे हैं, हम वाइब्रेट जिस फ्रीक्वेंसी में करेंगे वो फ्रीक्वेंसी एक लोअर फ्रीक्वेंसी होता है. जो भी फ्रीक्वेंसी उसके अबव दैट टोन आर नोन एज ओवर टोन्स. द लैटर डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड द टिम्बरे ऑफ साउंड. So, mummy, hi. It's just one page chapter. It will hardly take 20, 10, 15 minutes. It is intensity क्या होता है sound का? So, it is the strength of the sound which determines its loudness. Hi, Shashank. It is usually measured in decibels. So, intensity of sound जो होता है वो decibels में measure होता है. Some examples of intensity एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर और एज फॉलोज. विस्पर, अगर कोई विस्पर किया है तो उसका इंटेंसिटी क्या है? 30 डेसिबल है. नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे मैं अभी कर रही हूँ, मैं 60 डेसिबल पे बात कर रही हूँ. अगर मैं चिल्लाऊँ तो वो 90 डेसिबल हो जाएगा. डिस्कम्फर्ट ऑफ द ईयर 120 डेसिबल में हम लोगों को डिस्कम्फर्ट लगने लगता है. एंड पेन इन द ईयर 130 डेसिबल में हमें पेन लगने लगता है. लाउडनेस क्या होता है? इट इज़ द सब्जेक्टिव सेंसेशन produced by intensity. More the intensity of the sound, greater the loudness. Decibel क्या होता है? It is 1/10 of a bell and is named after Alexander Graham Bell. Decibel जो होता है वो Alexander Graham Bell, और डेसी मतलब हो गया 1/10. So 1/10 of a bell को decibel कहते हैं. The inventor of the telephone. ठीक है. It is not an absolute figure but represents a logarithmic ratio between two sounds, namely the sound being described and the reference sound. Sound can be measured as power जैसे वॉट बाय सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग साउंड को मेज़र कर सकते हैं, और एज प्रेशर दैट इज़ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इन ऑडियोलॉजी साउंड इज़ मेजर्ड एज साउंड प्रेशर लेवल. It is compared with the reference sound, which has sound pressure level of 0.0002 dynes per centimeter square.
are 20 micropascals, which roughly corresponds to the threshold of hearing in normal subjects at 1000 Hz. Decibel notation was introduced in audiology to avoid dealing with large figures of sound. Decibel इसलिए large figure of sound pressure level को avoid करने के लिए we introduced decibel. Normal threshold of his hearing is 200 dyne per centimeter square. Which causes pain in the ear. My God, मुझे नॉस्टैल्जिया हो गया. मुझे 11th क्लास से याद आ गया. एंड फिजिक्स उसमें होता था ना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मुझे बहुत गंदा लगता था. अच्छी physics, that is. The latter is 10 lakh times the former. My God. Formula of the decibel क्या होता है? 10 log power of S1 by power of S0. Now sound being S1 is sound being described, S0 is reference sound. या फिर इनका स्क्वायर ले लेंगे. अगर एस पी एल में कर रहे तो एस पी एल क्या हो जाएगा? साउंड प्रेशर लेवल. तो स्क्वायर ले लेंगे बिकॉज पावर ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ साउंड प्रेशर लेवल. या फिर इसको 20 लॉग भी कह सकते हैं. 20 लॉग वही होता है 10 का स्क्वायर 2 हो जाएगा. This is the last page that we have to read. If a sound has a SPL of 1000, that is 10 power 3 times the reference sound, it is expressed as 20 into 10, 20 into 3, that is 60 decibel. Similarly, a sound of 10 lakh, that is 10 power 6 the reference sound, SPL is expressed as 120 decibel and so on. अब noise क्या होता है? Noise, it is defined as an aperiodic complex sound. Aperiodic complex sound. There are 3 types of noise. White noise होता है, narrow band noise होता है, and speech noise होता है. So white noise क्या होता है? It contains all frequency in audible spectrum and is comparable to white light, which contains all colors of the visible spectrum. It is a broad band noise and it is used for masking. Narrow band noise क्या होता है? It is a white noise with certain frequencies above and below the given noise filtered out. मतलब एक छोटा सा बैंड ऑफ नॉइज रहेगा. Thus, it has a frequency range smaller than the broadband noise. It is used to mask the test frequency in pure tone audiometry. Pure tone audiometry में narrow band noise use करते हैं हम लोग. A speech noise क्या होता है? It is a noise having frequency in the speech range 300 से लेके 3000 hertz. All the other frequencies are filtered out. Masking क्या होता है? So masking, it is a phenomenon to produce inaudibility of one sound by presentation of another. मतलब दूसरा साउंड हम लोग चला करके एक पहला वाला साउंड को मास्क कर देंगे. इन क्लिनिकल ऑडियोमेट्री 1 ear is kept busy by a sound. तो हम लोग ऑडियोमेट्री में क्या करते हैं? एक कान को हम लोग उसका पूरा साउंड का जो एक्चुअल में हम लोग को सुनना है. मान लीजिए राइट ईयर को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो राइट ईयर में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो लेफ़्ट ईयर तक ना जाए, तो उसके लिए हम लोग मास्किंग कर देते हैं. यानी उसके लिए उसको दूसरा साउंड हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे, तो वो लेफ़्ट ईयर वाला नहीं सुन पाएगा. One ear is kept busy by a sound while the other is being tested. Masking of non-tested ear is essential in all bone conduction tests, but for ear conduction test it is required only for difference of the hearing between the two ears exceeds 40 decibel. ठीक है. Hi Asrar uncle. So sound pressure level क्या होता है? So the sound pressure level of a sound in decibel is 20 times the logarithmic base of 10 of the pressure of a sound to the reference pressure. The reference pressure is taken as 0.0002 dyne per centimeter square or 20 micropascal for the frequency of 1000 Hz and represents the threshold of hearing in normal hearing young adults. Thank you. So frequency range in normal hearing. Normal person can hear the frequency of 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं.
बट इन रूटीन ऑडियोमेट्री हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, 125 हर्ट्ज से लेके 8000 हर्ट्ज तक हम लोग प्योटोन ऑडियोमेट्री में टेस्ट करते हैं. स्पीच फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 500, 1000 एंड 2000 हर्ट्ज जो होता है उसको स्पीच फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन वॉइस फॉल्स विद इन दिस रेंज. Purton audiometry average is the average threshold of hearing in these three speech frequencies. It roughly corresponds to the speech reception threshold. Purton audiometry में हम लोग 5000, 1000 सॉरी 500, 1000 एंड 2000 हर्ट्ज में ही टेस्ट करते हैं, एंड 4000 में भी कर लेते हैं. ऑडियोमेट्रिक ज़ीरो, तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग दैट इज़ द फेंटेस्ट इंटेंसिटी विथ अ नॉर्मल हियर which a normal hearing person can hear will vary from person to person. The International Standard Organization adopt a standard for this, which represents as zero level of the audiometry. तो zero level जो होता है ना, person to person depend करता है. तो जो standard ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ जो है उसने एक सेलेक्ट किया है जो कि ज़ीरो लेवल ऑफ ऑडियोमेट्री रिप्रेजेंट करेगा. अकॉर्डिंग टू द आईएसओ, ऑडियोमेट्रिक ज़ीरो इज़ द मीन वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी इन अ ग्रुप ऑफ नॉर्मल हियरिंग हेल्दी यंग अडल्ट्स. सो हियरिंग लेवल क्या होता है, सो इट इज़ द साउंड प्रेशर लेवल produced by audiometry at a specific frequency. It is measured in decibel with reference to audiometric zero. It is an audiometer delivers to a sound of 70 decibel. It represents 70 decibel HL. Sensational level क्या होता है, it refers to the level of the sound above the threshold of hearing for an individual. Above the level of hearing मतलब सेंसेशनल लेवल इज यहाँ तक मुझे सुनाई दे रहा है, अबव दैट ये सेंसेशनल लेवल है. If someone is tested at 40 decibel sensational level, it means that he was tested at 40 decibel above his threshold. For a normal person, this would be a sound of 0 plus 40, that is 40 decibel HL. बट फॉर वन विथ हियरिंग लॉस से 30 डेसिबल का अगर हियरिंग लॉस है, इट वुड बी 30 प्लस 40, दैट इज 70 डेसिबल एच एल. इन अदर वर्ड्स, सेंसेशनल लेवल रेफर्स टू द साउंड which will produce the same sensation as in normally hearing person in speech audiometry. Discrimination sources are tested at 30 to 40 decibel sensational level. Sepedial reflex is elicited with a sound of 70 to 100 decibel सेंसेशनल लेवल. स्टेपिडियल रिफ्लेक्सेस अगर लाउड साउंड होता है तो स्टेपीज जो है वो खिंच जाता है ताकि वो लाउड साउंड जो है हमारे इनर ईयर को डैमेज ना कर सके. मोस्ट कंफर्टेबल लेवल क्या होता है, इट इज़ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड दैट इज़ मोस्ट कंफर्टेबल फॉर द पर्सन. लाउडनेस डिस्कम्फर्ट लेवल क्या होता है, सो इट इज़ द लेवल ऑफ साउंड which produces discomfort in the ear. Usually 90 to 105 decibel SL होता है. It is important to find the loudness discomfort level of a person when prescribing a hearing aid. मतलब किस लाउडनेस पे उसको डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है बिफोर प्रेस्क्राइबिंग अ पर्सन हियरिंग एड. अब डायनेमिक रेंज क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट कंफर्टेबल लेवल एंड लाउडनेस डिस्कम्फर्ट लेवल. The dynamic range is produced in patients with positive recruitment phenomenon, as in the case of cochlear type of hearing loss. तो ये होता क्या है कि कंफर्टेबल लेवल एंड लाउडनेस डिस्कम्फर्ट लेवल का डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक रेंज. एंड द लास्ट वन इज साउंड लेवल मीटर. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लेवल ऑफ नॉइज एंड अदर साउंड्स. साउंड लेवल मीटर हैज़ डिफरेंट weighting network A, B, C for different sensitivities at different frequency. When describing a sound measured by a sound level meter, the weighing network must be indicated. Noise level are often expressed as decibel, which refers to sound pressure level measured as A network, where the low frequency and extremely high frequency are given
much less weightage compared to those of the middle range, which are more important and responsible for noise induced hearing loss. ये रेंज वाले का होता है. Okay, we have done this chapter. Now we have to do assessing of hearing, जो कि एक बहुत important chapter है जिसमें pure tone audiometry and everything is. So we will start this session like 15 minutes after. Okay, so be there. Thank you guys.